Good morning and warm welcome to you all. I'm Vaibhav, your host for today. Our topic for today is emergency response. It shall be taken by Miss Lekha Nair. She shall be covering types of emergencies, handling of emergencies, mock drill, first aid, followed by question and answer session. Our agenda for today is virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Ms. Lekha Nair, question and answer session, and last closing session. About Sadgun Sangh. Sadgun Sangh conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with the mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. Let's a brief introduction of Dr. Sundar Kataria. Designation and organization, Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. His academic qualification, Doctorate in Business Management, Mechanical Engineer. His experience, Rajasthan Atomic Power Project, India's first nuclear power plant, RAPP at Rawatbata, Kota, built by Indian engineers, worked as nuclear scientist for 11 years and successfully completed and commissioned the plant. Engineers India Limited, first batch of engineers to develop Bombay High offshore oil and gas fields, mega offshore complex platform, truck and submarine pipelines, under dive inspection and indigenization oil and gas equipment, etc. Det Norsec Versatile's world largest classification society worked for 17 years at various capacity for the certification of fixed offshore installations, submarine pipelines, onshore projects, and personnel qualification, underwater inspection divers. ICS. He is founder of India's first certification conformance assessment body established in the year 1999, provider of total quality solutions, certification of management system, ISO, inspection, testing, and training qualification of personnel. He received several national and international awards, received Lifetime Achievement Award for the contribution for the corrosion technologies from NES International by NIGIS under NES USA, social worker, protection of life, asset, and environmental and safety. Now I request Dr. Kataria to virtually inaugurate the session. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. Introduction of our today's keynote speaker, Ms. Lekha Nair. Designation and organization,
Senior Consultant, DMC International. Her academic qualifications are Electronics and Telecommunication, Lead Auditor, QMS, EMS and OHSS. Area of specialization and experience, a certified and experienced professional of electronic waste, BRC6 packaging, quality control and quality assurance implementation activities for the products as per guidelines and regulator requirements, running own consultancy services, Mrs. Dia Management Consultancy in India and Middle East, project implemented in Kuwait Oil Company, energy management system in gas gathering stations and process units. ISMS projects completed Vitor Cloud, Info Analytica, Tester Technology, Equilibrium and Quick Team. Please welcome Lekha ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Vaibhav. Hi, and good morning, all of you. And a very happy new year to all of ICS and Sadgun Sangh and all the participants, regular participants. Today's subject is emergency response. You can share the slides, Vaibhav. Okay, ma'am. Just a second, ma'am. I will. We all know that earlier the standard was OSHA's 18,001 and it was converted to 45,001. And it's a beautiful standard in which clause the emergency response is representing. Auditors, please write on the chat box which is the clause number. No auditors joined yet. Which is a clause number. Hello, everybody's participation in the subject is required. Otherwise, emergency response will fail. So please participate in the Sadgun Sangh meetings. And the auditors, OSHA's auditors, please respond. Everybody knows, the industry knows how to act for the emergency response. And for the last so many of years, OSHAs are implemented by industry. OSHA standard is implemented adequately. After that, the 45,001 standard came, and it is a beautiful standard, and they have explained all the things in detail. Vaibhav, slide number 2. Hello, shall I share? Yes. The emergency is an undesirable occurrence of event. Can I close my video? Undesirable occurrence of events of such magnitude and nature that adversely affect production, cause loss of human lives and property, as well as damage to the environment. Controlling the emergency will require prompt actions by the operating staff, the staff of various agencies, emergency teams, and outsiders when called for. Minimizing the effect on people may be achieved by prompt communication, rescue, and evacuation. I will explain. Next slide. This is the 45,001 clause 8.2 emergency preparedness and response. Once we will read the clause and we will discuss. The organization shall establish, implement, and maintain processes needed to prepare for and respond to potential emergency situations as identified in 6121, including
establishing a planned response to emergency situations, including the provision of first aid, providing training for the planned responses, periodically testing and exercising the planned response capability, evaluating performance, and as necessary, revising the planned response, including after testing and in particular after the occurrence of emergency situation. Communicating and providing relevant information to all workers on their duties and responsibilities. Communicating relevant information to contractors, visitors, emergency response service, government authorities, and appropriate the local community. Taking into account the needs and capabilities of all relevant interested parties and ensuring their involvement as appropriate in the development of the planned response. The organization shall maintain and retain documented information of the processes and on the plans for responding to potential emergency situation. This is the requirement as per 45,001 standard. But many of the cases, what happens? So by about 2 minutes, I will tell to run the slide. Okay. Many of the instances, what happened? First of all, it is clearly says that you have to inform the government authorities about your emergency response plan. Actually, there will be a DISH Directorate of Industrial Health and Safety Office near to your factory. We have to communicate the emergency preparedness response plans and all these manuals to them so that they will come to know, okay, there is a factory, they have such and such activities, they have chemical storage, they have these emergencies will come to, can happen. So mainly what industry do a mistake, they don't communicate properly to the government authorities. They will not prepare the same. Then it will be a mess. So auditors, please look into all A to G points. And if at all anything is missing, they can raise an NC. In the new year itself, we are explaining the emergency preparedness so that the factories can have less accidents and incidents. In Gujarat, we have to conduct a mock drill in every 2 months. Now government, earlier it was 6 months, in quarterly ho gaya. We have frequent chemical accidents happening in the industry, and the requirement now, as per the notification, it is in every 2 months we have to conduct a mock drill because of the accidents have increased. So for during audit, this clause is very important, and all the auditors look into the A to G points and see the plan as well as the records. If it is not maintained, given NCR, let the industry improve on the systems. Okay. Next. Identify the emergency and the affecting area, disclose the type of emergency and to act accordingly, initially contain and ultimately bring the incident under control to minimize damages to property, life, and environment. Mainly, if a major emergency happened, the property, life, as well as the environment is destroyed. Rescue and treat casualties and safeguard others. Identify the personnel affected, inform their relatives, and provide for their needs. Normally, when an accident happens, the relatives come to know after that. Okay, the factory team will take them to hospital. They do all these activities. After that, the communication normally happens, but it is required inform them immediately and ensure that all the activities are done and communication is properly carried out. Ensure the safe rehabilitation and return to normally in the affected areas. Provide authoritative information to the news media and others. News media को normally वो लोग attend नहीं करते हैं, और it's not a situation now. Medias are very active, and whatever happened, we have to communicate adequately. Otherwise, it will be again an issue. Okay. Preserve relevant records and equipments for subsequent inquiry into the cases and circumstances which lead to the emergency. Next. Level of emergencies, there is level 1, 2, 3, and 4. Actually,
On-site emergencies, that is the type of emergencies which can be handled and controlled by the management with on resources as per on-site emergency plan is called as on-site, level 1. Okay, the factory itself controlled the emergency. Second is, we have level 2. Next slide, Vaibhav. Level 2. It is mutual aid, local crisis, offsite emergencies may happen. I have a slide, another slide. I will explain that offsite, how it is happening. And we have a neighborhood industry. We can ask their help. We can have a contract with them that we will using all these fire tenders and everything of the neighborhood industry. That is level 2 and level 3. Level 3, next slide. District crisis and offsite emergencies. Okay. Level 4 will be the countries people will be attending. A national team will be attending. That is level 4 emergency. Okay. Next. The main objective of the emergency plan are to control and contain the incident, accident, and if possible, eliminate it. To minimize the effect of the incident on person, property, and environment. That's why the factories should have an emergency plan and they will do a mock drills for all emergency situations. Okay. Next. Plant failure, human error, vehicle crash, sabotage, earthquake, natural calamities, and fire. Okay. Mainly we do see in industry, they will have a plan for only for fire. All other emergency situations, they are not highlighting. Auditors, please make a non-conformity if they are not identified the emergencies of the factories. Okay, next. Fire. I have a video. That video you can run. In that, it is a small video. Small fire happened. After that, it became very big. And there is an offsite chances also. There is a transformer near to that, but fortunately it was escaped. Okay, the government authorities came, fire tender came, and there is a once fatal was there. It's a recently happened accident. Okay, we should learn from that how they are running here and there. Okay. There is no auditors still join. Somebody shooted this. That's why we are able to see. വണ്ടി മാറ്റേ നീ വണ്ടിയിൽ മാറ്റുന്നത് വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നേ എടാ ഇത് പൊന്തിച്ചത് മക്കളെ ഇത് പൊന്തിക്കേ എടാ ഫയർ ഫോഴ്സ് വിളിച്ചടാ വേണോ എടാ വണ്ടി ഇപ്പൊ പൊന്തിക്ക് പോണേ എടാ ഇത് പൊന്തിക്കേ വണ്ടിയൊക്കെ കത്തോന്ന് വണ്ടി വണ്ടി ഇത് പൊന്തിക്കൽ വെക്കാതെ എടാ ഉള്ളിലോരോട് പോവാം അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പുറത്തോട് കിടക്കാൻ പറ അപ്പൊ വിളിച്ചതാ ഉള്ളിലുള്ള
മൊത്തം ആ പൈപ്പ് ഹൗസ് വിളിക്കേ. എടാ ഇവിടെ ഫയർ ആയിടാ, ഫയർ ആയ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫയർ ആയിടാ, അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഓട്. എടാ എടാ നിങ്ങളുടെ ജാനിതാ, എടാ ഇത് ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്തോടാ, ഈ ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്താ ഹോട്ടലിന്റെ. എടാ ഈ ബില്ലിംഗ് കത്താണ്ട. ചേട്ടൻ പൊക്കോ. എടാ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ആ ബാക്കിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ, ബാക്കിൽ കൂടെ. ഇത് കറുവറ്റി ന്യൂ ഇയർ കുറി കത്തുപിടിച്ചാണ് സംഭവം. കറുവറ്റി കേബിൾ ലക്ഷത്തിന് മുന്നിലെ ന്യൂ ഇയർ കുറി. Okay, you can stop. Okay, thank you, Vaibhav. अभी क्या क्या देखा हमने एक्चुअली, एक सिंगल फैटल एक्सीडेंट में वो कंप्लीट बिल्डिंग गया, और नियर टू दैट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मर एंड अ हाईवे, व्हीकल्स आर मूविंग देयर, और वो ट्रांसफॉर्मर पे कुछ भी हो गया, then again it is an off-site emergency and the people traveling on the highway, उनके गाड़ी पे या स्कूटर पे कुछ भी हो गया तो वो ऑफसेट हो जाएंगे. अरे इनसाइड देयर वाज अ सिंगल पर्सन, उनको ये लोग कम्युनिकेट किया, मोबाइल थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे, पीछे से निकलो, मगर वो निकल नहीं पाया, ही डाइड. एंड दिस इज द सिचुएशन. ये सिंगल फैटल की सीन हमने दिखाया. तो 3 फैटल, आई हैव सीन 3 फैटल हैपनिंग in my own factory. That's why I'm an OSHA certified. और वो कितना बड़ा हो सकता है उसका इंटेंसिटी, और हमारे साथ काम कर रहे लोग दूसरे दिन नहीं है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो अहमद वगैरह आया, इसलिए बाजू वाला रेस्टोरेंट को कुछ नहीं हुआ है, इट वाज सेफ. ओके, और ट्रांसफॉर्मर को भी कुछ नहीं हुआ, उसके पहले वो लोग एक्शन लिए. सो लॉट ऑफ मैसअप. सब कुछ जानने के बाद भी ऐसे फायर सिचुएशंस हो रहा है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Fire tanks first among the major hazards in the plant. Major industrial fires rise out of leakage of flammable materials from the systems, and they're getting ignites from some source of ignition, and it may turn into large scale of fire. In case of large discharge of flammable material, formation of vapor clouds, the cloud traveling to another location and causing a fire or explosion is possible. This poses danger threat to communities nearby or even at some distances. The damage in both cases could be extensive. वो chemical में vapor clouds will move. Okay, वो इंडस्ट्री पे भी होता है वेपर क्लाउड. सम प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में नॉर्मली वेपर क्लाउड वेरीफाई करना चाहिए, नहीं तो वेपर क्लाउड विल मूव एंड फायर विल हैपन. अनदर डेंजर from fire is that when flammable material gets ignited, there is the possibility of release of combustion gas being toxic in large quantities. Major fire with danger of explosion hazards from prolonged high levels of thermal radiation, heat and smoke. अभी देखा एक छोटे से ये था लोकेशन, वहीं पे कितना फ्यूम्स हो रहा था. ओके, और वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इतने ज्यादा हो जाता है, इमीडिएटली ज्यादा हो जाता है. देखा कितने सेकंड के है,
कितने सेकंड में वो पूरी खत्म हो गई. ओके, सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Flammable material release can mix with air and form explosive mixture at certain specified. In fact, in this case, वहां पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मर है और बाजू में दूसरी कोई केमिकल कंपनी है. सपोज हियर तो सभी नियर केमिकल कंपनीज बहुत ज्यादा होते हैं. Then how it was? Explosive mixture at certain specified concentrations. When this mixture is ignited due to getting any source of ignition, electric spark, chemical spark, hot job, static charge, welding, cutting, friction, electrostatic spark, the result is an explosion. Explosions are characterized by shock waves and can result in structural damage to building, debris, flying objects, person knocked down or buried under collapsed structural, and so on. An explosion can cause massive fire, blast waves, flying debris, high level of thermal radiations. Next. Large quantities of toxic gaseous chemicals released into atmosphere by accidentally can cause serious injury or death to large population. The damage, harm from toxic gas release depend upon quantities released, physical properties of the material released, toxicity of the material, wind velocity, etc. तो भोपाल ट्रेजेडी पे पता है टॉक्सिक गैसेस आएगा तो लॉट ऑफ फैटल हो जाता है. Fracture, puncture of pipe will produce rapid release of toxic substances in limited direction, which create toxic cloud in limited size and may quickly disperse. Failure of large storage tanks or process vessels may create massive release of toxic substances, which affects major area, including environment. इवन एक केस भी मैं बता सकता है, जयपुर में IOCL पे हुआ है एक्सीडेंट, उसमें बहुत पोल्यूशन हुआ है. एक्चुअली व्हीकल्स जो पोल्यूट करते हैं उसका कितने टाइम्स पोल्यूशन वाज हैपेंड इन 7 days or something. Okay, next. Flammable gas release. If flammable gas releases and come into contact with the source of ignition like spark, friction, static charge, hot surface, it may explode and may result into fire, blast wave radiation, heat radiation, etc. Next. It is Gujarat Factory Rules 1963. Here it is mentioned. Each state have their own rules, and the mock drills are different as explained in the state rules. Okay. Bursting of plant, personal injury or disability. Bursting of plant used for containing or supplying steam under pressure greater than atmospheric pressure, collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist, and other appliances used in raising or lowering persons or goods or any part thereof, or the overturning of a crane. Okay, these are the cases in Gujarat. They have explained in their rules. Explosion, fire, bursting out, leakage of escape of any molten metal or hot liquor or gas causing body injury or any person or damage to any room or place in which persons are employed, or fire in rooms of cotton pressing factories where a cotton opener is in use. Okay, read the particular rules of the state so that we will get more information which they have explained there. Next slide. Main elements. Now we have to address the emergency response in proper way. Leadership and administration. The factory head and factory head's name will be available in the emergency response manual. His mobile number is not acceptable. Landline number is the requirement. Okay. Why the landline number is calling by Factory Act? Because the person is tired or he switched off his mobile. Suppose then if an emergency happened, nobody will respond. That's why we are calling for the factory heads landline number. Okay. Safety officer or safety controller
landline number. Mobile numbers are mentioning, still we will be calling for a landline number. And roles and responsibilities, what the factory head will do, what the HR person will do, what the safety officer will do. And emergency actions, light and power, source of energy control, protective and rescue equipments, communication, medical care, mutual aid is the nearby company, whether they have the capacity or not. And public relation. Why we are calling for a PRO there? We have to visit the nearby industry and ask for a help. If at the moment of emergency, if they denied, then it will be a mess. That's why we have to make a contract with them or a sign up with them. If at all required, some people may charge also. Some people will help, but we should have a PRO and a discussion. If at all happened, we will use your this thing. Fire tender or the fire water or something. Protection of vital record, training, periodical revision of the plan. Emergency response plan. Uske revision number देखो, date देखो, it will be 2017, 2018, then 2011, 2015. ये सब हम लोग audit पे देखते हैं. तो periodical revision of the plans are also called. They are not revising the plan, then raise an NC there itself so that they will revise the same. Okay, a lot of things may be changed, a lot of processes may be changed. Suppose उन लोग gas line नहीं था, after that gas line आया, then emergency response plan same रहेगा. Okay, that moment raise an NC. Again, next slide. अलार्म सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम. देखो ये लोग बाहर आया तभी मोबाइल से ये लोग कॉल कर रहा था वो पर्सन को, ठीक है, पीछे से जाने के लिए बोला. नॉर्मली क्या इमरजेंसी एक्सिट उन लोग एवरी टाइम हम लोग एनसी दे दे के इंडस्ट्री पे तक गया. अभी केमिकल प्लांट्स क्या है, एक ही एंट्री होता है, वो तो स्टेयर्स होगा, हार्डली एक पर्सन उसे उतर सकेगा. तो एक्सिट और इमरजेंसी इसमें कम्युनिकेशन कैसे मिला, कितने टाइम में आपको एक्सिट होने चाहिए, सायरन सुना ही नहीं दिया, तो प्रोसेसर्स का नॉइज इतना रहता है और ये लोग ईयर मफ या कुछ भी रखा है तो सुनाई नहीं दे रहा है. तो ये दीज ऑल थिंग्स मॉक ड्रिल्स में वेरीफाई करना. एस्केप रूट, आगे पीछे टकरा जाता है, किधर से आना है, रूट आउट करने का. एवरी ऑडिट हम लोग एनसी 8.2 पे देते आए अभी, सो दैट इंडस्ट्री विल इम्प्रूव. ओके, इवैक्यूएशन कैसे किया, असेंबली पॉइंट किधर है, कितने टाइम पे पहुंचा, एंड काउंटिंग ऑफ पर्सनल. इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है. आई विल टेल एन एग्जांपल. एक्चुअली आई यूज्ड टू डू कंसल्टिंग, तो आई यूज्ड टू सिट इन द फैक्ट्री कॉन्फ्रेंस रूम. ओके, तो आई वाज सिटिंग देयर, फायर अलार्म आया, तो आई वाज शॉक्ड. फायर अलार्म आया तो मैंने भी बाहर आया. तो पीपल व्हाट दे थिंक, आई एम सिटिंग देयर एज एन आई एम ए कंसल्टेंट. मैंने कुछ बोला होगा फायर अलार्म डालने के लिए. मैंने बोला आई हैव नॉट टोल्ड, मैं भी बाहर आके खड़े हैं, तो सर्च फॉर द दिस थिंग. तो दैट 2 minutes लॉस्ट. आई वाज शाउटिंग, मैंने नहीं कुछ नहीं किया है. देन दे गॉन टू देयर एंड वेरीफाइड किस एरिया से आए हैं. Then a contractor person, he was searching for a 3-pin plug, and what he done, he fire call point खींच लिया. Then I understood that इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है ये फायर कॉल पॉइंट कौन सा है, प्लग इन कौन सा है. ओके, तो चलो 2 minutes लॉस हो गया, फिर भी वी हैव कैच्ड दैट पर्सन ऑल्सो. सब लोग बाहर आए, फिर हेड काउंटिंग करे. The security person said, no, ma'am, still there are 2 person inside. Then we gone, safety officer दौड़ी रहा. Then the IT team का कोई सर्वर रिपेयर के लिए 2 service engineers are inside. वो सर्वर रूम पे ही है. Okay, they are not came out. So well educated people, if you are hearing a fire alarm, बाहर आओ. Then it delayed again 2 minutes, तो 4 minutes 5 minutes हम लोग mock में plus points, negative points, and what all happened, everything write it down. And counting में actually the security person was very good. He have a board that all the contractors entered. He have write 1+1+1+,
And suddenly we have looked into the register, then we came to know that there is a 2 IT service engineers also inside the plant. और सब लोग नहीं आए तो काउंटिंग ऑफ पर्सनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गेट पे बोर्ड नहीं है, रजिस्टर्स नहीं है, एनसी दे दो। कितना सब कॉन्ट्रैक्टर्स अंदर आते हैं? 10 to 15 सब कॉन्ट्रैक्टर्स अंदर आते हैं इन बिग प्लांट। 10 to 15 सब कॉन्ट्रैक्टर्स, और उनके सभी लोग कितने लोग हैं हेड काउंट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और किस पर्सन को क्या हो गया वो काउंटिंग करना भी इमरजेंसी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इमरजेंसी सायरन्स, लास्ट कॉर्नर पे जाके सायरन बजा के चेक करो, सायरन की आवाज आता ही नहीं। एंड एस्केप रूट वेरीफाई करो, चल के जाता है। हम लोग अभी बिग प्लान्स में यूज टू यूज ए कार, कैसे वेर इज असेंबली पॉइंट्स, कैसे आ रहा है, हैंड दौड़ के आएंगे तो कितने टाइम पे आ रहा है, वो सभी वेरीफाई कर रहे हैं अभी। ओके नेक्स्ट, इमरजेंसी फैसिलिटीज, फायर प्रोटेक्शन एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज। फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, अभी सबके पास फायर एक्सटिंग्विशर है। हमने ये भी सीन सिचुएशन पे देखा कितने छोटे फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फायर एक्सटिंग्विशर कैपेसिटी हम बताएंगे, इसकी कैपेसिटी कितने है, कितनी बड़ा इंसिडेंट हो सकते हैं, ये छोटा है तो चेंज करना चाहिए। एक्चुअली डिसाइड करो कितना डिस्टेंस पे रखना है, कितनी कैपेसिटी पे रखना है। ऊपर से फायर एक्सटिंग्विशर का फिलिंग नहीं किया होगा, उसका सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट नहीं किया होगा, और वो खोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसमें इतना डैमेज कंडीशन पे वो रहता है, ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सभी जगह पे एनसीआर दे दो, ठीक है। इमरजेंसी लाइटिंग, कैसे इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम रहता है, मैं बोला मेन पावर के साथ कनेक्ट करते हैं, वहां पे एनसी दे दो। मेन पावर पहले चला जाएगा और आपका इमरजेंसी लाइटिंग सेपरेट होनी चाहिए, एंड स्टैंड बाई पावर, ठीक है। वेरीफाई, टाइम डाल दो यहाँ पे, है ना, ऑडिट पे टाइम डाल दीजिए, अदरवाइज वी विल नेवर इम्प्रूव दिस। इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट, ब्रीथिंग apparatus एंड एयर सिलेंडर उसमें है कि नहीं, फर्स्ट एड किट्स एंड स्ट्रक्चर्स। इमरजेंसी में नॉर्मल फर्स्ट एड लागू नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स ऊपर 3rd फ्लोर पे 2nd फ्लोर पे रहते हैं, उनको स्ट्रक्चर पे कैसे लेके आएंगे। अभी हमने ये क्वेश्चन पूछा तो वो क्लाइंट लोग भी तभी सोच रहे हैं, हाँ सही बात है, स्ट्रक्चर तो हमारा इतना इसमें से निकलेंगे नहीं। ओके, टॉर्चेस रहता नहीं है, फिर मोबाइल टॉर्च यूज करेंगे। मोबाइल वो टाइम पे आप यूज ही नहीं कर सकते। ओके, लैडर, विंड डायरेक्शन इंडिकेटर्स, लैडर, सेपरेट लैडर्स रख के एक पर्सन को स्ट्रक्चर पे लेके आएंगे, ऐसे बोलो, इट्स नॉट फिजिबल एट ऑल। तो डू ए थरो ऑडिट फॉर 8.2, really industry is struggling here. Okay, next slide. Mock drills were conducted to test the plan and improve our emergency preparedness. The result of these exercises, identification and assessment of all credible scenarios, survey of various rules, regulations and standards were taken as basis for modifying the on-site emergency plan. Okay, all possibilities, अकेले fire नहीं, ऑल पॉसिबिलिटीज। तो टेबल टॉप मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। अभी गैस लीकेज करके मॉक ड्रिल करो ऐसे कोई नहीं बोल रहा, तो वहीं पे वो एरिया पे, वहां पे 10-15 मेंटेनेंस लोग रहता है, वहीं पे आप मॉक ड्रिल्स कर सकते हैं। और मॉक ड्रिल्स एक रिपोर्ट देख के ऑडिटर को दिखाएंगे, ये हमने एक मॉक ड्रिल किया है। अभी हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते उसी को, ठीक है। ऑल सिचुएशन की मॉक ड्रिल्स, और गुजरात हैव एवरी 2 months यू हैव टू डू मॉक ड्रिल, तो अभी रूल भी है। तो आई डोंट नो अदर स्टेट्स हैव, कई में क्वार्टरली है, कई में 6 monthly है, बट प्रैक्टिस इट, मॉक ड्रिल्स की फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज करो, एंड फॉर ऑल सिचुएशंस मॉक ड्रिल्स करो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। On-site emergency plan should contain site plan. Site plan, why it is a requirement? अभी PNGRB पे साइट प्लान गेट पे होनी चाहिए, फ्लूरेसेंट होनी चाहिए। केमिकल कंपनीज में भी आप फ्लूरेसेंट रखो, आपका केमिकल हजार्डस एरिया किधर है, बाहर से आता है, फायर टेंडर को कैसे पता चलेगा? फ्लूरेसेंट पे एक एरो नहीं रहता है तो रात को दिखते ही नहीं। रात को लूमिनेंस भी, वी हैव स्टार्टेड ऑडिटिंग सेकंड शिफ्ट, वहां पे लाइट्स भी नहीं, ठीक है। कैसे लोग चले जाएंगे? दैट्स व्हाई वी आर हैविंग फैटल एक्सीडेंट्स। ओके, साइट प्लान क्लियर नहीं रहेगा, उसमें डायरेक्शंस नहीं रहेगा, हजार्डस एरियाज नहीं शो हो रहा है, टैंक्स नहीं शो हो रहा है,
डीजल टैंक्स आर नॉट शोइंग, ऐसे सिचुएशंस पे साइट प्लानिंग क्लियर करने के लिए बोलने का, और गेट पे ही साइट प्लान चाहिए, फ्लोरेसेंट पे चाहिए, केमिकल कंपनी है, क्लास ए कंपनी है, मींस रेड कैटेगरी पे या ऑरेंज कैटेगरी पे, देन साइट प्लान फ्लोरेसेंट ही पूछो, ठीक है। बहुत हो गया इंडस्ट्री पे, वो लोग ऐसे वैसे रख देते हैं, फिर बाद में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो फिर बोलेगा पता नहीं प्लान, उनको पता नहीं चला। चलो दूसरी केस भी है, फायर टेंडर आया, उनको पता नहीं है, वो तो पूरा फैक्ट्री पे डाल देगा पानी हो जो भी हो, तो बाकी चीज भी नुकसान हो जाता है। प्लान शोइंग फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, प्लान शोइंग फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, कहाँ कहाँ कितने कितने डिस्टेंसेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स है। Plan showing hazardous material storage area, material safety data sheets and hazardous chemicals, main control center, list of emergency equipments, list of safety equipments, nearest hospitals, ambulance number, fire station, government officials, transport providers, key personals. Okay. Ambulance number. अभी पूछा सेकंड शिफ्ट एम्प्लॉइज को, आपका डिस्पेंसरी का नंबर क्या है, गेट का नंबर क्या है, नहीं पता रहता है। एम्प्लॉयज को नहीं पता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं पता रहता है, बिग गैप है इसमें इंडस्ट्री पे। सो उनको ट्रेनिंग देते वक्त भी एम्बुलेंस नंबर, गेट के नंबर, फायर स्टेशन की नंबर पूछ लो। इवन मेरे क्लाइंट की प्रीमाइसेस में मैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को पूछते हैं, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार वो फायर कॉल पॉइंट को क्रॉस करते हैं, फायर कॉल पॉइंट कौन सा है पूछेगा तो उनको पता नहीं रहता, नंबर किधर है, एम्बुलेंस नंबर किधर है, या गेट की नंबर तक उन लोग को याद नहीं रहता है। तो HR and safety officers have to be very careful and ask them frequently, train them. नहीं याद रहता है तो लिख के दे दो, ID कार्ड्स के पीछे दे दो, all these requirements. Okay. Next. As emergencies rise suddenly, the necessity to remain always alert and ready with a supporting facility to face them is of paramount importance. Periodically conducting regular tabletop exercises and mock drills, our preparedness will improve, which will help us to minimize the consequences of emergencies as and when they rise. Next. Okay, thank you. Actually, this is a quick presentation we have planned, and for 2024 be a safe year, and all auditors do 8.2 emergency response strictly in the industry, so that there will not be any accidents and incidents. Thank you. Any questions? Auditors, I'm really missing my auditors. ICS, OSHA's auditors. Thank you, ma'am, for the presentation. So now I request all the delegates and participants, if you have any questions, you can unmute yourself and ask directly, or you can put in the chat box. Yes, sir. So you are very senior to me, and you know the things well, how the industry learned all these things, and still there are gaps, sir. Ma'am, there is a question from Dr. Kataria, sir. So please welcome Kataria, sir. Hello, sir. Good morning. Yeah, very, very good morning. Thank you, Lekha ji. It was very nice. You have presented very, very vital and very important subject matter. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, and we also do a lot of, I also do number of audits for AMS, where OSHA's is there. But unfortunately, that they say like master, like servant. So it has to come from the top to bottom when the Yes, safety. sir. Yes, sir. And plus the safety culture has to start from the childhood itself. Because we do not cultivate things. Even if you see takes, for example, in India, especially two-wheelers, four-wheelers, they keep on jumping the signals. Why they should jump?
and his son, his child, his wife is sitting behind, and that culture is not percolated. They are not Yes, yes, yes. conscious about it, because his small mistake can cause a lot of problem to others who is coming from the front, who is Yes, following sir. the signal. Hmm. Yeah, and that's why it has to be a lot of sea change. Plus, we had involvement in Alang quite long time. I don't want to enter into controversy, but when it comes to leader don't want to spend money on the safety. I don't know what is the problem. Wear the helmet and safety shoes does not cost much, and providing the good drinking water does not provide. And apart from that, where is lacking, because we have a lot of contract people Yes. being used, and the contractor, when we ask the organization responsible for the safety, who is going for safety audit and other thing, they say no, he is contractor man. He cannot say like he is a contractor man. So I would like if you can put little focus Yes, sir. Yes, sir. I will on the explain the same. responsibility of I will explain contractor. the same. I And will this, explain the same. I will explain the same. yeah, Actually, the I will 45,000 appreciate standard, it, because that is 45,000. the biggest lacuna in our Yes, system. yes, yes, sir. I will explain. 45,000 standard says the contractor is not responsible. The main company is responsible. First of all, auditor should know that the company is responsible. Okay. So, auditors, please compel them. Yeah, if in the contract, the PPs are into the contractor's head, please remove it. PP's responsibility is the company's, the organization's responsibility. Okay. You take that and issue the helmet, safety shoes, earplugs. Earplugs, earmuff ka we have started giving NCRs during ONGC audit itself. वो लोग earplugs था ही उन लोगों के पास, earmuff भी वो use ही नहीं करते थे. तभी we have started issuing NCs there itself. और now PPs use करें, ये helmets use करते ना, helmets का तो इतना bad condition रहेगा. मैंने बहुत एनसीस दे दिया और उसको प्रॉपरली यूज नहीं करेगा, उसका बेल्ट नहीं रहेगा और हेलमेट हेलमेट ही नहीं है, ऐसी कंडीशन पे इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू, वेरीफाई द सेम, सैम्पलिंग करो, कॉन्ट्रैक्टर की सैम्पलिंग करो व्हेन दे हैव डन द ट्रेनिंग. अभी बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन ये लोग ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, 70% एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं दिया है, तो ट्रेनिंग में ही एनसी दो, पीपी यूजेज में एनसी दो, ऑपरेशन कंट्रोल पे जाके एनसी दो. एंड 8.2 पे अभी वी हैव पुट छोटे छोटे एनसीज क्लबों के लिख रहा है इंडस्ट्री पे, और वी हैव वार्न्ड देम दैट वी विल पुट इट इन मेजर, देन वी विल हैव एन एवरी 3 months ऑडिट. ओके, तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट किया है सर ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स पे एक कॉन्ट्रैक्ट पार्ट को, और काफी चीजें इम्प्रूव हो चुका है. विदाउट एनसीआर अभी ये मूव ही नहीं हो रहा है ये 8.2 क्लोज. Then that's why I have put intentionally the clause 8.2 here, and we need industry to improve. और ये क्लोज कॉन्ट्रैक्टर के हेड पे डालेंगे, दैट इज डिफिकल्ट. और अभी हमने देखा ये ड्राइवर्स का, अभी तक उन लोगों को कोई अमेंड किया ना उनका रूल पे, देन दे हैव स्टार्टेड स्ट्राइक एंड ऑल. अभी तक वो लोग मार ही सकता था लोगों को, अभी 10 years इम्प्रिजनमेंट बोले तो वो लोग बोल रहे नहीं नहीं रूल अमेंड करो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो बिग व्हीकल्स भी हो रोड पे, रोड सेफ्टी तो है ही नहीं इंडिया में. एंड इवन आई स्केयर टू ट्रैवल नाउ इन टू व्हीलर, और मेरा किड्स के भी साथ मैं टू व्हीलर में नहीं जाती हूँ. तो वी आर रेगुलरली कम्युनिकेटिंग दम, और इतने फास्ट जाते हैं और सिग्नल्स दे आर नॉट माइंडिंग द सिग्नल्स, ऑल दिस आर इश्यूज. एंड कम्युनिकेटिंग, कितनी कम्युनिकेट करो. अभी कियोस्क वगैरह रखे हैं एमएनसी कंपनीज फॉर कॉन्ट्रैक्टर एजुकेशन, एंड हमने क्लोजेस डलवाया है कॉन्ट्रैक्ट साइन अप में ही, आप सेफ्टी का सभी चीज करो, और सेफ्टी का सुपरवाइजर को ट्रेनिंग वो एग्जाम पास होने के बाद ही वो प्रीमाइसेस पे आ सकता है. एंड बिग बिग एमएनसी सभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर. और छोटे लोगों को क्या है, दे हैव लिमिटेशंस, बट ऐसे नहीं, छोटे हैं इंडस्ट्री, उनकी टर्नओवर हायर रहता है, contract turnover higher रहता है, then we have to compel. That's why I'm every time I'm calling the auditors,
गिव एन एनसीआर इन 8.2 एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, और ये इमरजेंसी की सिस्टम्स नहीं है तो मेजर भी दो. ओके. और स्टैंडर्ड इज कॉलिंग फॉर, एंड in audit sir I am asking for the where is the nearest dish office, have you communicated the same? नहीं नहीं, डिश ऑफिसर ऑफिस दूर पे है, बट इट इज आवर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस इमरजेंसी मैनुअल वी हैव टू सबमिट टू द डिश ऑफिस एंड गेट वन साइंड कॉपी. मैं अभी कंपल्सरी बोलते हैं ये साइंड कॉपी उसकी टेबल पर रख दो, साइन ले लो और लेके आओ. नहीं तो इंडस्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो जाने के बाद ये लोग कम्युनिकेट करते हैं, हमको पता नहीं था इतना बड़ा केमिकल इंडस्ट्री ये एरिया पे था. तो these are the things happening regularly in the industry. That's why we should be very careful. This 8.2 clause, sir, exactly told the same. Okay. And in family, friends, and everybody, what is the difference? मैं ये बताऊं, हाई स्पीड में भी जाएंगे, what is the difference? It is hardly 10 minutes difference. आप कितने भी स्पीड पे जाओ, या 60 पे जाओ या 100 पे जाओ, what is the difference? हार्डली 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में आप क्या बेनिफिट होने वाला है, वही मेरी क्वेश्चन है. तो इतनी स्पीड अप किस लिए कर रहा है वो पता नहीं. अहमदाबाद में भी अभी फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स होने लगे हैं, ब्रिजेस वो ये सभी, इतना रोड क्लियर है ना, तो बहुत एक्सीडेंट्स हुआ है. और 7 to 8 लोग एक्सपायर हो गया, ऐसे कोई रोड एक्सीडेंट. आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द वीडियोस. एक्चुअली हुआ है, अहमदाबाद में भी हुआ है. एर्लियर तो रोड्स थोड़ा ये था, टर्न्स वगैरह नहीं ले सकते, अभी तो सभी लंबे लंबे रोड्स है, तो एक्सीडेंट्स इंक्रीज्ड. इनफैक्ट फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट रोड्स बनाए, मगर एक्सीडेंट्स इंक्रीज. तो रोड सेफ्टी इज अनदर सब्जेक्ट सर. देयर इज अ सर्टिफिकेशन आल्सो रोड सेफ्टी के, बट पीपल, वेरी रेयर पीपल आर took that road safety standards. Reliance, Adani लिया है कि नहीं पता नहीं. Inside premises they have to, not for generic companies have to. Reliance लिया है जामनगर में. So it is a very another area we have to give lot of importance. Yeah, thanks, sir. Any other questions? As Vaibhav, as there is no questions, again I will wish. Excuse me, ma'am. Who is There this? is one question in the chat box. This is Surajit. In the chat box, there is some messages from Hari. Read it. Vaibhav, please read it. Yes, ma'am. Ma'am, he wrote that I want to see one example of evacuation route, emergency plan, evacuation plan, etc. See the same. Yeah. Okay. Take his number. I will explain him. Actually, evacuation plan. Industry पे, big industry पे, there will be plans किस area से आना है, किस doors use करना है. Okay. तो emergency exit doors, उसमें entry नहीं होगा. It will be exit doors. Okay. 1 second. Exit doors पे exit हो गए, किधर जाएंगे, assembly point पे जाएंगे. Okay. और वो एरिया से आएंगे नहीं कोई भी, और सीधे असेंबली पॉइंट्स पे जाके फिर डिस्कशंस करेंगे, इमीडिएटली डिस्कशन करेंगे किस पॉइंट्स पे एक्सीडेंट हुआ है, फिर वो अटेंड करने के लिए फायर टीम जाएंगे. ओके, ईआरटी टीम जाएंगे, और वो कम्युनिकेट करेगा, और जो ट्रेन्ड ईआरटी मेंबर्स करेंगे. और ये प्लान बनाया हुआ रहता है, ये इमरजेंसी रिस्पांस मैनुअल में रहता है. ये प्लान भी रहेगा, उसका साइड प्लान रहेगा, और रूट रहेगा, एंड असेंबली पॉइंट रहेंगे, किधर से आना है. दैट्स व्हाई एक्सिट की एम्बलम प्लांट में नॉर्मली बिग प्लांट रहता है, तो आधे जन एक असेंबली पॉइंट में जाएंगे, पीछे वाला असेंबली पॉइंट में जाएंगे. मगर पीछे सपोज मेनली हम लोग ये डिसाइड करेंगे, वहां पे यूटिलिटी रहता है या कुछ भी रहता है, तो उसके दूर पे असेंबली पॉइंट प्लान करते हैं. ओके. तो 2 ऑफ द टीम मैनेज करने के लिए इतना बिग है, तो सेफ्टी 2 ऑफिसर होनी चाहिए. इफ देर इज ओनली 1 सेफ्टी ऑफिसर, व्हाट वी विल बी कॉलिंग फॉर, देयर विल बी वन सिंगल असेंबली पॉइंट, और आगे फ्रंट की साइड पे या इधर भी गेट की साइड पे इवैक्यूएशन हो जाए, ऐसे. ठीक है. आई विल शो यू द प्लान and the manual and exit boards and etc. Okay, please contact me. There is my number here.
8128410185. Okay, I will guide you properly how this session after this session. Okay. Yeah. Yes, sir. I have, anyway, any Yes. question other than I have one input and also question. Recently, I had gone to a theater, picture Okay. hall. Okay. Nowadays, a lot of small picture halls are there above the mall. And those maybe Above the capacity of mall. 100, yeah, 100 Mhm. capacity or maybe 50 Mhm. capacity or the maximum 200 capacity. When I went there, it was unfortunate, rather I'm a little quality conscious and eh, safety conscious. So I saw there is only one entrance and there was only two lifts were there for going up. And then when entered in the hall, then sitting place, if you see, that was also, it was a good sitting place. But again, for getting down, there was only center space, not on the side space. If you see, there are, say, about Earlier, 20 seats are there. Both the side, there was no way to come out. You had to come out on the center. Plus, there was no emergency exit, no escape route was there. It was one entrance and one exit only. I fail to understand how our authorities approve such a premises. They put yes, sir. when those accidents are there, then we realize ye nahi tha, wo nahi tha. What is the use later on? Yes. Why we don't realize Actually, how earlier time. how the fire safety certificate was issued to that theater? Yes, sir. That is a question. Actually, earlier, any conferences, there will be exit. Lot of exits are there in earlier cases. I don't know the mall के ऊपर ये theaters रखते हैं वो नया है. And fire NOCs issue करते वक्त भी इन लोगों को verification करना चाहिए. And side पे और mainly तो पिक्चर चल रहा है तभी अंधेरा रहता है. वहां पे कुछ भी फायर हो गया तो एक्सिट की वो लाइट, इमरजेंसी लाइट्स ऑल आर द रिक्वायर्ड. और staircase था क्या सर? staircase only lift are there, staircase नहीं है. staircase होगा ना? Staircase is also only one. There are no Only two staircases. one. One staircase. दो staircases, two staircases होनी चाहिए और कैपेसिटी के हिसाब से. और 100 people भी छोटा नहीं है सर. ये 100 people भी एक साथ निकलेंगे ना तो it is a mess. Okay, to fire approvals in now Ahmedabad old premises fire certificate nahi hai, so they cannot work. Government will give a notice to them. In fact, Gujarat is very strict in this. AMC is very strict. Ahmedabad Municipal Corporation. वहाँ पे है तो they will remove it. और notice दे देता है. And they strictly verify fire का भी. Mumbai, I have seen a lot of old infrastructure and all these things, but municipal government should be very strict for issuing the fire NOCs. Or fire NOCs, it is not easy to get a fire NOC, sir. New buildings also. So it's a requirement. Left side पे walkway होनी चाहिए, exits होनी चाहिए, and properly according to the capacity, the emergency doors should be there. और टू वे दोनों साइड पे staircases होनी चाहिए. staircases ये होनी चाहिए, विड्थ वाली होनी चाहिए. छोटे staircases तो अगेन एक्सीडेंट हो गए. छोटे staircases होते हैं लोगों को निकल नहीं पाए. तो these are all the issues facing. और हमारे सामने आ जाते तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कर सकता है. देयर आर पोर्टल्स एक्टिवेटेड नाउ in Kerala. I know that all villages, cities have now portals. We can complain in the portal itself. I don't know other states, either state authorities ko complain karna, it is very difficult. Still we can write complaints, they will accept. I think so. Actions will be late, still complaint they will accept. That is an option here. So any department we have find these things, you can make a complaint. Yeah, because today is a digital world. I think there should be option also in municipal corporation where such a, if lacunas are there, such a gray areas are there, people should be able to voice
Yes, their yes, raise and concern. all. As Yes. here, I think so. In north and all, less complaints they have put. But in Kerala, Tamil Nadu, Bangalore, and all, if we have seen anything such incidents, we can put a complaint. In fact, the CM have run a road show and all these things, and he received 6 lakhs complaints, sir. Different. It is not safety related. All these issues, people will bring into his notice. That is the main thing, that okay, government will come to know, okay, these are the issues happening. These are the issues happening. That should be active, in fact. But many of the cases, there are political this thing happens, people don't respond. Okay, वो फिर वो उन लोगों को कुछ हैरान करेगा, ऐसे सब सोच के people skip the same. But as a responsible citizen, we can always complain to the concerned departments. Yeah, thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. And Happy to see you, and happy New no, Year it's to my all of pleasure. you, and have a safe New Year ahead. Okay, thank you. Thank you, Vaibhav. Happy Ma'am, there is a question in the chat box from Ajay Bhandari. Okay. That he would like to understand if there is any difference between emergency responses for OHSMS and for EMS. EMS. Actually, EMS is not related. Health and safety में personal involve हो जाता है. EMS में क्या है, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो पोल्यूशन के रिलेटेड एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं. ओके, तो ये सीन हुआ है उसी में ही, कितना पोल्यूटेंट्स बाहर आ गया, कितने लोगों को उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हुआ. ओके, तो वो पोल्यूटेंट की अमाउंट और उसमें ज्यादा नुकसान हो जाता है. तो एनवायरनमेंट में इट काउंट्स, दूसरी डिपार्टमेंट में वो लोग कंप्लेन करेगा. ओके, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे जाके कंप्लेंट करेंगे, वो डिश पे नहीं जाएगा, वो जीपीसीबी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे जाएंगे. इतनी नुकसान हो गया, नेबरहुड को डिस्टर्बेंस हो गया, उन लोगों को. दूसरा हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, मगर एनवायरमेंटल इमरजेंसीज में बहुत लीकेजेस हो गया, केमिकल लीकेजेस हो गया, तो हेल्थ डायरेक्टली आ जाएंगे उसमें. ओके, इफ इट इज टॉक्सिक लोगों को हो ही जाएगा. और बाकी एनिमल्स और फ्लोराफोना तो दिखता ही नहीं है. बाकी साउथ में चलो फ्लोराफोना है, ऐसे दिख रहा है. और यहाँ पे इतनी केमिकल कंपनीज है और वो ऑलरेडी चले गया है. ठीक है, टाइम लगता है उनको बाहर आने में. और भी इन गांधीनगर हमको छोटे छोटे बर्ड्स होते थे, वो बर्ड्स चले गए थे. एक 3-4 इयर्स में चला ही गया. एंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड, सब लोग पानी रखने लग गए हैं, फूड रखने लग गए हैं, ऐसे उसको एनवायरनमेंट को ये करने के लिए क्यों चले गए. तो वो इंडस्ट्री की इफेक्ट है वो. ओके, फिर आफ्टर कोरोना ये लोग आ भी गया है, एनवायरनमेंट ठीक हो गया है. तो मगर सेव एनवायरनमेंट वो करना है, उसकी इमरजेंसी हो रहा है तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ही होगा. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. व्हेन एक्सीडेंट हैपेंड और एनवायरमेंटल एक्सीडेंट्स भी हुआ है, तो वो दोनों पैरेलल है. ठीक है, हैपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हेल्थ का भी नुकसान हो जाएगा, एनवायरनमेंट का भी नुकसान. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू once again. Ma'am, excuse me. That I have not, I have taken your number. I will explain that evacuation plan and all that. Yes, guys. Okay. एक क्वेश्चन है हाँ, मेरा. बोलिए बोलिए बोलिए. मैं अभी 2 इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. वो इंडस्ट्री किसका? एक ही कॉल नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, क्लियरली बोल दीजिए, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? मैं कंसल्टेंट हूँ एक्चुअली. ओके, आईसीएस के बिहाफ में कंसल्टिंग करता हूँ. यस, नेपाल से हूँ, हरीश द्विवेदी. ओके ओके और मैं 2 इंडस्ट्री में अभी आईएमएस का काम कर रहा हूँ, क्यूएमएस, Okay. ईएमएस और ओएचएस सीएमएस. ओके ओके. और दोनों इंडस्ट्री एक ही कंपाउंड में है. तो ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान, इवैक्यूएशन प्लान, रेस्क्यू प्लान दोनों के लिए अलग अलग चाहिए. बट दोनों कंपनी क्या बनाते हैं? दोनों कंपनी क्या बनाते हैं सर? दोनों कंपनी आयरन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एक ही कंपाउंड में है, एक ही जगह में है. एडमिनिस्ट्रेशन फ्यू सपोर्टिव प्रोसेस आर कॉमन. ठीक है, एज वी डू ऑडिट, दोनों डिफरेंट एंटिटी है.
एक को सर्टिफिकेट देगा, दूसरे कंपनी को भी सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। तो जो भी पार्ट आप शेयर कर रहे हैं, सपोज फायर वाटर है या कुछ Yes. भी है, इट शुड बी प्रॉपरली डू एन एग्रीमेंट। नहीं तो दोनों को पैरेलली हो गया तो वो भी यूज कर रहे हैं, मैं तो ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, ये मेरा प्रॉपर्टी है, और ये भी पूछेगा मेरा प्रॉपर्टी है, ऐसे फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी ए प्रॉपर एग्रीमेंट। ओके, ये फायर वाटर है या क्या है, हम म्यूचुअली एग्रीड, इसलिए तो सेवरल टाइम्स वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट इट शुड बी म्यूचुअली एग्रीड। ओके, दोनों। मगर सर्टिफिकेट इज डिफरेंट एंटिटी में, ये कंपनी को भी सर्टिफिकेट देगा, दूसरे कंपनी को भी सर्टिफिकेट देगा, तो यहाँ पे भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होनी चाहिए, वहां पे भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होनी चाहिए। क्या चीज आप शेयर कर रहे हो वो म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट करो, ठीक है। सपोज बड़ा फायर टेंडर है या एम्बुलेंस है, जो भी है वो एग्रीमेंट के ऊपर होनी चाहिए, मगर इमरजेंसी प्लान, मैनुअल एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, क्योंकि वो दो सर्टिफिकेट इशू करता है। ओके, Okay. दो Thank you. सर्टिफिकेट, इट इज अ डिफरेंट एंटिटी। Yes. थैंक यू Thank सर, you. Thank you, ma'am. थैंक यू। Vaibhav, एनी मोर क्वेश्चंस? Thank you once again, all of you. हेलो And हेलो Sadgun team, yes sir. मैडम, ये अभी जो बात हुआ था वो थिएटर हाँ। वाला, और जहाँ पे भी आपने कहीं इस तरह से लेकुना देखा है, हम्म, तो उसका टोटल असेसमेंट करके देने का अभी तक तो नहीं, हिंदुस्तान असेसमेंट नहीं करना है सर, असेसमेंट नहीं करना है। मैं असेसमेंट, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं असेसमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने देखा है एक ही स्टेयर केस बना हुआ है, एग्जिट का गेट नहीं है, स्टेयर केस है वो भी छोटा है, उसने एग्जिट का कोई मार्किंग नहीं किया हुआ है, ये सारा तो एक ऑडिट करके फिर उन्हीं को देना पड़ेगा ना मैडम, अथॉरिटी को, कि किसको ये आपका देंगे? ये हाँ, कि ये आपको ये पहले आपका वन सेकेंड मेरे को एक्सप्लेन करना दो। आप पहले देखेंगे ये विलेज पे आता है, म्युनिसिपल पे आता है, किधर पे आता है, ठीक है, किसने इनको परमिशन दिया है, वो अथॉरिटी पे आपको कंप्लेंट देना है, ठीक है। परमिशंस कहाँ से आया है? विलेजेस में भी थिएटर रहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे भी रहता है, तो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना। नहीं, वो उसको मैं कंप्लेन करने से पहले मेरे को उसको तो पूरा ऑडिट करना रहेगा ना। यस, पूरा देख के करना, नहीं तो फिर वो लोग हमको ऑब्जेक्ट उल्टा उल्टा बहुत हाँ, हो उल्टा जाएगा। करेगा। तो टेक ऑल द थिंग्स प्रॉपरली, कहाँ पे है, किस एरिया पे है, किस लोकेशन पे है, आजकल तो गूगल पे सभी मिल जाता है, तो उस हिसाब से ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो सकता है, प्रॉपरली कम्युनिकेट करो। एंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंप्लेंट को अटेंड करना। यू कैन गो टिल कलेक्टर, ठीक है। ये लोग सभी नहीं लिया है तो कलेक्टर हैव टू टेक एन एक्शन प्लान। अब वो एरिया का कलेक्टर को भी दे सकते। नहीं, उसको ऑडिट करूंगा तभी तो मेरे को पूरा उसका एनालिसिस होगा कि कहाँ से क्या कुछ हो सकता है, सिचुएशन है हाँ, तो आप एक उसका पिक्चर देख लेना तभी पता चल जाएगा। मैं पिक्चर बहुत साल हो गई। ओके, थैंक यू मैं भी फॉर बात द करता हूँ। पार्टिसिपेशन थैंक यू and auditors. Be safe 2024, wishing you all a safe 2024 and emergency 8.2 पे maximum NC देके इंसिडेंट्स इंडस्ट्रीज में से निकाल दीजिए, 0 इंसिडेंट, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। ओके, थैंक यू once again, thank you Vaibhav. Yes, thank you, ma'am. So, since today our topic was on emergency response, so I would like to inform you that ICS has published Quality Mantra on our official website, that is www.icspl.org. To view Quality Mantra, go on this website and view that Quality Mantra. So thank you, ma'am. Thank you. Our next session is on 13th of January. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS and OHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu and Hindi. For reading any of the above book, please contact Ms. Sushma Kindalkar on the given contact details. Feedback form. Please register on www.sadgunsang.org and go in your login and give your valued feedback to us.
So thank you, Lekha ma'am. Thank you all the participants and delegates to make this webinar very Bye-bye. successfully. Now Bye it's bye. time to officially close this session. Thank you.